morning students. Today we will start the concept of mutation. ठीक है, mutation समझने से पहले we have to understand the basic concept. The basic concept that we have studied in the class 11th, that is our DNA is made up of 4 base pairs. Okay, 4 base pairs कौन से? A, T, G, C, that is adenine, thymine, guanine and the cytosine. And if you remember the structure of the DNA, suppose we are making it like this. So here we have these base pairs. In the class 11th we have done this. I will show you it here. So if the base pairs are here, A, T, G, C, G, the opposite side it will be T, A, G and here C. Means A will bind with the double bond T and G will always bind with the. That is the basic DNA. The whole DNA is made up of with the U combination of these 4 base pairs. Now what is mutation? Now little bit ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा आपको. अब देखिए म्यूटेशन का कंसेप्ट क्या कह रहा है. म्यूटेशन कह रहा है कि इट इज दैट फिनोमेना which results in alteration. Alteration means change in DNA sequence and results in the change in the genotype and the phenotype of an organism. जीनोटाइप और phenotype मैंने आपको बताया है ऑलरेडी. ठीक है, तो पहले जीनोटाइप चेंज होगा. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप. नाउ if we take this example here again, suppose now this is one gene. ठीक है, this is the part of the DNA and it contains this sequence. Okay, this is the sequence of the base pairs on that part of the DNA and that is known as the gene. What is mutation? Mutation says that if in this is the basic sequence and it is code for some proteins. We know that how the DNA express, they code for the protein. This thing is known as the genotype and this is this particular protein formation that is known as the phenotype. Okay, now what will happen in the mutation? If instead of this T is replaced by AA is there, but instead of T if there is G, बाकी सारा सेम है. If this T is replaced by G here, mutation है, sudden changes आते हैं हमारे DNA के अंदर. It can lot of factors can be there, chemical can be there, X-rays can be there. So if this G changes, so the whole sequence will changes. Sequence of what? Sequence of genotype will change. And when the genotype will change, definitely this protein will not be synthesized because this thing has been changed to this. We will study further. Lot of we have to discuss about the disorders. There you will see what this single base pair change can cause. Okay, so this is the concept of, we can say, mutation here. Now see, it is results in the change in the genotype and particularly the phenotype of the organism. Clear? Recombinations के अलावा म्यूटेशन जो है, इट इज़ द अनदर फिनोमेना विच लीड टू द वेरिएशन. अभी हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में किया था कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी वेरिएशन कॉज करता है. क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टडी आल्सो अबाउट द डीएनए मोर इन डिटेल फॉर्म. क्लियर? नाउ here we will study the deletions and the insertion of the segment of the DNA which results in the change in the chromosomes also. ठीक है, and because the genes are present on the chromosome, alteration in the chromosome will result in the abnormality or the aberrations. Aberrations जैसे कि हम कैंसर सेल्स में देखते हैं. ठीक है, तो ये डिलीशन और द गेन का मतलब है कि अगर सपोज करो यहाँ से ये पोर्शन डीएनए से डिलीट हो गया, या यहाँ पे इसी पोर्शन पे ये वाला चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई इस जगह आके, सपोज करो ये हमने ऐड कर दिया ये वाला.
ठीक है, हम नहीं करते, हम बायोटेक से कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर कई बार सडनली हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हमारा पहले जीनोटाइप इफेक्ट होगा और फिर हमारा क्या होगा, फिनोटाइप इफेक्ट होगा। क्लियर? नाउ दे हैव गिवन कि इन एडिशन टू दीज थिंग्स the mutations also arises because of the change in the single base pair of the DNA and that is known as the mutation। जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज करो यहाँ पे G, सिंगल G के बदले T लग गया, तो ये क्या है, सिंगल बेस पेयर जो है DNA का ये चेंज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से म्यूटेशन आई है। तो इस तरह की म्यूटेशन को क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट म्यूटेशन। मतलब if the G is replaced by T, that is known as the point mutation, ठीक है। and example is the sickle cell anemia, don't worry, we will study about the sickle cell anemia। then deletion and insertion of the base pair of the DNA cause the frame shift mutations, ठीक है। अगर सिंगल आया है, रिमेंबर सिंगल है अगर बेस, तो पॉइंट म्यूटेशन। सम टाइम क्या होता है कि इस पॉइंट पे सपोज करो ये दो ऐड हो गए, दो बेस पेयर इस पॉइंट पे ऐड हो गए बीच में आके, तो दे आर नोन एज द, और उसकी वजह से पूरी की पूरी आगे की जो फ्रेम होती है इसकी वो पूरी चेंज हो जाती है, उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर? सो हियर the factors they are talking, there are many chemical and the physical factor which cause the mutation and those factors are known as the mutagens। and UV radiations, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, it is the very potent powerful what, mutagen। similarly X-rays are also, exposure is okay, but if the X-ray is, a person is exposed to the X-ray for a long time, then it can also cause the mutation in their DNA। cells के DNA में mutations cause कर देता है और it can cause then cancer। okay